touching topic, that is immersive learning experience, the new frontiers of learning. So, for this purpose, today we have a wonderful guest with us, Dr. Subrat Kumar. He is having a leadership and organizational development expert and the CEO and founder of People Lab Private Limited. With over a decade of experience, he trained more than lakhs of professionals across the banking, IT, manufacturing, microfinance, telecom, education, and many more. He has designed and delivered high impact leadership interventions for the Fortune 500 companies and senior executives at the global levels. Subrat has organized many workshops, seminars for the government and non government organizations across the many big corporates. So he's having a very talented hand in this regards and in this field. So without wasting much time, I request Dr. Subrat sir. So please you guide us and enlighten us. Thank you so much, sir. Good afternoon, everyone. Good afternoon. Perfect. So before I start, we can switch this off. Is it needed for ये recording के लिए जरूरी नहीं है तो switch off कर सकते हैं हाँ तो switch off perfect. So before I start, I have a question for all of you, and of course I am thankful to Honorable Vice Chancellor sir for inviting me here to interact with all of you. Over the next 70-75 minutes which we are together, I have two options. मैं आपसे अच्छी बात करूं या मैं आपसे सच्ची बात करूं. लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कई बार सच्चाई कड़वी होती है. So what I still give you a choice, अच्छी या सच्ची. Now this is the best part. अब मैं कुछ भी बोलूं, you can't hold me responsible because you have signed up. Am I right? So right, we were having lunch. Trusty sir was also there, Vice Chancellor sir was there, and they were all praise for all of you out here. They said that, we have got an amazing bunch of faculty across the colleges. I met some of you in the morning. And they said, we have got an amazing bunch of faculty. And I said, because with sir, my relationship goes back more than a decade. And I told sir that, you know what? I'm yet to meet a vice chancellor who does not say good things about the faculty. आप ही की faculty आप तो अच्छा बोलोगे ही. No, genuinely they are talented, they are dynamic, they are outstanding. So I told him when I interact with them after lunch, I will take a test of your faculty. If they pass the test, I will agree that yes, they are dynamic, outstanding, and extraordinary. If they don't pass the test, with all due respect, we will agree to disagree. And then he said, you can take any test. तो context ये है कि अब एक मैं test लेने जा रहा हूं. And the beauty of taking a test, and who knows it better than you people? Even when you don't know the answer, you can ask questions. So my disclaimer is I do not know answer to all the questions which I'm going to ask. I have only limited knowledge about, but I can ask questions just by the virtue of being on this site. So the question for all of you is very simple. All of you will stand up. Kindly stand up. Sofas are excluded. So what I'm going to do is, I'm going to tell you a letter of English alphabet. Notebook अगर आप नीचे रख दें. I'm going to tell you a letter of English alphabet which you have to make using your entire body. No fingers, no hands, entire body. मुझे दो ही लेटर आते हैं. I know I for India. Y for Yahoo. But intelligent कौन? आप. Dynamic कौन? आप. Outstanding कौन? आप. किन्होंने कहा? आपके वाइस चांसलर ने. तो बाकी अल्फाबेट कौन बनाएगा? आप. So let's start. I for India. Y for Yahoo.
We need to do. Till the time I tell the next letter, you have to do that. Fantastic. C for Calcutta. C for Calcutta. C for Calcutta. सिर्फ मुझे इधर एक ही बात बता दे मैं किधर से पढ़ूं, आधे इधर है आधे उधर है. Decide which side should I read from. C for Calcutta. C for Calcutta. Okay. P for parrot. P for parrot. P for parrot. Sir, I am waiting for you. The last row. P for parrot. R for Russia. R for Russia. R for Russia. I hope you are taking a few photographs, sir. R for Russia. J for Japan. J for Japan. J for Japan. F for France. F for France. सर कुछ तो करना पड़ेगा, आप सामने ही हो. F for France. E for Egypt. E for Egypt. Sir, you have to use your entire body. पहले ही बोला था hands only not allowed. E for Egypt. E for Egypt. E for Egypt. S for Singapore. S for Singapore. Yeah, please make an S for Singapore. Amit, you may just go at the back and check if we have any defaulters. S for Singapore. Z for zebra. 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 Okay. M for mango. M for mango. I said, madam, you have to use your entire body. You cannot make it only using your hand. M for mango. M for mango. Perfect. Let's freeze. Let's freeze. We have captured few photographs that we will be sharing with your students on social media, tagging all of you, right? What my colleagues in other university think I do, what my students think I do, and what I actually do in a faculty development program. But you know what? Please have a seat. What you did is the exact problem which is plaguing most of Indian universities. What you did is exactly the biggest problem which is plaguing most of Indian universities. What was my instruction to you? What was my instruction to you? I will tell you a letter in this alphabet and you have to make it using your entire. Did I ever say you have to do it alone? तो आप तो और भी ज्यादा खतरा हो यूनिवर्सिटी के लिए. I will come to that in a while. I never told you have to do it alone. Am I right? फिर क्यों इतना कष्ट कर रहे थे? I need 12 volunteers to come forward. Any 12 come forward. बॉस साल भर आप लोग कहते हो वॉलंटियर वॉलंटियर, आज मुझे मौका मिला है तो कैसे छोड़ दूं. चलिए 12 लोग आगे आ जाइए. Any 12 come. Any 12 come. Yes. देखो मैं इस प्रोग्राम के बारे में एक ही बात बता सकता हूं. जैसा आप इस प्रोग्राम में बिहेव करोगे ऊपर वाला देख रहा है, वैसे ही स्टूडेंट्स आपके साथ साल भर बिहेव करेंगे. So if you want students to volunteer when you invite them, you also better volunteer when I invite you. अभी मैं पशुपतिनाथ भगवान के मंदिर से आया हूं, तो अभी तो हमारी बातें मत ही काटो आप. Have you got 12 people? 4, 8, 10. 2 more.
Ladies, I request, yeah, we have got 2 more. Please give a round of applause for them. So which university is yours? Right. Uske initials kya honge? M? Okay. Can I request all the 12 out here to make MU on the dice? MU. Can you make a quickly MU on the dice? MU on the dice. See, जिस तरह से ये एक दीवार बना दी गई है, लेडीज, सम ऑफ यू काइंडली कम एंड हेल्प योर फ्रेंड्स. मैंने 6-6 सोचा था, लेकिन इन्होंने पहले ही डिसाइड कर दिया हम 8-7-7 है. और आपने बनाया क्या है? आपने क्या बनाया है? बॉस, you don't want me to write to Microsoft कि एक नया फॉन्ट आया जाए, मंदसौर यूनिवर्सिटी फॉन्ट. This got an M. हैंड राइटिंग थोड़ी सी अच्छी कीजिए. Yeah, ladies, couple of you can come and help your friends. Please go help your friends. और किधर से पढ़ूं MU? किधर से पढ़ूं? उधर से पढ़ूं? मैं ऑनेस्टली अभी भी नहीं, मैं किधर से पढ़ूं? परफेक्ट. आप लोग चाहो तो हाथ जोड़ सकते हो एक दूसरे से, फिर मुझे पता चलेगा M कैसा है. Okay. Do you think it is okay or it can improve? So then improve na baba, your friends only are there, improve it. Tell them how to improve. उनको क्यों बीच में खड़ा किया है भारत इंडिया को? आप किधर अटैच्ड हो ये बताओ M का? एग्जैक्टली. और दूसरे पीछे वाले क्या होंगे? अरे भाई, जो भी इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड मशीन ड्राइंग पढ़ाते हैं, कृपया हेल्प. Perfect. Please give a round of applause for them. I will tell you what I wanted to share with all of you. What I wanted to share is, faculty are expected to play 4 different roles. They are expected to teach, they are expected to research, they are expected to train, and they are expected to contribute in institution building work. The biggest challenge facing the Indian universities, and I'm saying this with all due respect, is the lack of contribution towards institution building. Everyone is trying to work for their own good. And I must tell you one example. Harsha Bhogle, someone asked Harsha Bhogle in the year 2008 that out of Sachin Tendulkar, Rahul Dravid, and Saurav Ganguly, who's the best captain of Indian men's cricket team, and what did he reply? He replied, I do not know about the best captain, but the worst captain is Sachin Tendulkar. Because Sachin Tendulkar thinks there are 11 Sachin Tendulkars playing in the team. The reality is there is one Tendulkar and 10 ordinary mortals playing in the team.
My question to all of you, there are deans, I'm aware. There would be HODs, there are professors, there is registrars are out here. My question is, how many of you have got the ability to take your entire team together? How many of you are actually concerned about the institution building? I just have a simple thing. I'm sure some of the management faculty also would be here. Can you tell me which is the first MBA college in the country? Which was the first MBA college in the country? Give me the name. भारत का पहला MBA कॉलेज कौन सा था? कृपया मुझे नाम बताएं. It was no IIM. Sorry? The first MBA college of India was a college called IISWBM in Kolkata. Indian Institute of Social Welfare and Business Management. That was the first MBA college of India. The reality is, all of you belong to the higher education fraternity, and almost none of us have even heard the name of IISWBM. Am I right? Yes or no? You go to the students, they further don't know. Even if when you tell them IISWBM, it does not ring a bell. What am I trying to help you understand? Do you realize that for all of you inside this room, your career prospects are also linked with the standing of your university? Where the university stands is also going to determine if I tell you a trivia. The trivia is when IIM Calcutta was being set up, IISWBM was the mentor institute to IIM Kolkata. Now think where IIM Calcutta is today and where IISWBM is. I was very happy to hear about the great legacy of your university. But I must also tell you, the laurels of the past are no guarantee of even survival in the future. The laurels of the past are no guarantee of even survival in the future. I don't want to get into the often quoted example, whether I talk about Nokia, whether I talk about Kodak. I don't want to get into all of that. Yeah, sorry, please come. My simple point to all of you is, my first question, how do you rate yourself? And I don't need an answer, it's about you. How do you rate yourself on a scale of 10 as far as institution building is concerned? Because if the institution collapses, all of you will suffer the collateral damage. And this is first thing which I wanted to share from all of you. My second point, faculty today are passing through the toughest challenges of their life. And I completely echo and empathize that. Why do I say so? For decades, what was one thing which faculty enjoyed over students? For decades, what was one thing which faculty enjoyed over students? They enjoyed information arbitrage. What is information arbitrage? फैकल्टी के पास कुछ जानकारी है जो स्टूडेंट के पास नहीं है, तो स्टूडेंट आपकी बात क्यों सुनता था? बिकॉज उसको वो इंफॉर्मेशन चाहिए होती थी, और वो देने वाला इंफॉर्मेशन आप ही एक सोर्स थे जो आप उसको इंफॉर्मेशन मिलेगा. ऑन अ लाइटर नोट, लोग पहले कहते थे पीएचडी तभी पूरी होती है जब अपने गाइड के लिए सब्जी का थैला उठा के लाते हो. Why? Because गाइड के पास कुछ ऐसे रिसर्च पेपर्स थे, आपके पास उन रिसर्च पेपर का एक्सेस नहीं होता था. What happened when the entire technology boom came? When the technology boom came, understand the information arbitrage went for a toss. गूगल पे जाकर के कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च कर सकता है, यस और नो? तो फर्स्ट विकेट कहां गिरा? फर्स्ट विकेट ये गिरा जब टेक्नोलॉजी आई, जब गूगल आया, तो आपका इंफॉर्मेशन आर्बिट्राज खत्म हो गया. हाउ मेनी फैकल्टी आउट हियर फ्रॉम इंजीनियरिंग कॉलेज? रेज योर हैंड. Right, you have got a great computer science department. Do you realize what AI has done? AI has ensured that your skill arbitrage is over. AI ने क्या किया है? AI ने किया है कि आपका स्किल आर्बिट्राज जो है वो खत्म हो गया है.
I use the paid version, the topmost paid version of Claude. I just need to go and give the command. क्या मुझे कोडिंग सीखने की जरूरत है? Coincidentally, I'm also an engineer in electronics and communication. But in third year of engineering, I knew that I can do anything but engineering. और मैंने अपने फेयरवेल में अपने प्रोफेसर्स के अलावा 2 मित्रों को अलग से धन्यवाद दिया था कि अगर वो नहीं होते तो मेरी डिग्री होनी नामुमकिन थी। इत्तेफाक से दोनों आज यूएस में, वन इज विथ इंटेल एंड वन इज विथ Apple or somewhere. They're doing phenomenally great work. One of them is working in cancer research, the one who's in Intel. He's working on that. What am I trying to tell you? जब टेक्नोलॉजी बूम आया तो क्या हुआ? आपका इंफॉर्मेशन आर्बिट्राज खत्म हो गया। जब एआई बूम आया तो आपका स्किल आर्बिट्राज खत्म हो गया। Why would anyone like to know from you stdio.h, conio.h, and therefore there will be 3 brackets on the left, they would be of 3 different types. They don't need to know it. When they don't need to know it, my question to you is, why should a student listen to you? आप जो भी बता रहे हो उसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो स्टूडेंट के पास अवेलेबल नहीं है? I was interacting with your first year students in the morning and I said something which I'm repeating for you because it is relevant for you as well. Why do we listen to anyone in our life? हम अपनी जिंदगी में किसी की भी बात क्यों सुनते हैं, बताइए? अगर मामला जिद का है तो मैं तब तक रुकूंगा जब तक आप ना बोलो। Yes, tell me. Experience, okay? What else? Respect. अभाव, प्रभाव और स्वभाव। वेरी गुड, प्लीज गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम। मैं उसे बहुत ही क्रूड भाषा में बोलता हूं। The first reason we listen to anyone is because we don't have a choice. मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है। सर ने मेरा इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया, उन्होंने एक बात नहीं बताई। आई कैन रीड फेसेस, और मैं अगर आपके चेहरे पढ़ पा रहा हूं तो आप में से कुछ लोगों के चेहरे पे लिखा है कि अगर सामने सोफे वाले नहीं होते तो दुनिया की कोई ताकत हमें बिठा नहीं सकती थी। Let's be honest about it. What is the first reason we listen to anyone? We don't have a gentleman came on television many years ago at 8 p.m. He said, बहनों और भाइयों, आज रात 12 बजे से ये नोट चलेंगे, ये नोट नहीं चलेंगे। Did we listen? Why? We didn't have a. Let's be honest about it. Reason number 1, we listen to people because we don't have a choice. Reason number 2, we listen to people because we like them, we love them. Go back a few years. When you were students, I'm sure many of you would also have done such things. जिनको आज याद करो तो सोचो मैं कितना बड़ा बेवकूफ था। आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। भाई किसी भी हालत में नहीं है, लेकिन फिर भी भाई क्यों गाड़ी चला रहा है? क्योंकि वो भाई है। What is the second reason we listen to anyone? We like him or her, we love him or her. What is the third reason we listen to anyone? The third reason we listen to anyone is because he or she genuinely brings value add whenever he or she interacts with us. उससे जब भी इंटरेक्ट करता हूं मुझे कुछ नया सीखने को मिलता है, मुझे नया कुछ जानने को मिलता है। Now understand, why should a student listen to you? इतना तो आप जेनजी को जान गए हो कि कमांड एंड कंट्रोल का वक्त गया। आई होप यू एग्री। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है वो चला गया। इफ एवरी स्टूडेंट लाइक्स यू और लव्स यू, then you are either a stand-up comedian or you are a dictator. Because any good professor, let me be very honest about it, any good faculty, you cannot have all the students liking you. There will always be a set of students who will like you and who will not like you. It's bound to be there. What is the only thing left with you? You bring value add. मैं यहाँ पे एग्रीकल्चर कॉलेज में मेरी बात हो रही थी एक फैकल्टी से, तो मैंने कहा कि सर इत्तेफाक से मैं पंतनगर यूनिवर्सिटी से मैंने अपनी इंजीनियरिंग की है, जहाँ का कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बहुत ही पॉपुलर है। वहां पर एक वाइस चांसलर आए थे,
वो पहले आईसीआर के डीजी भी रह चुके हैं, डॉक्टर मंगला राय। और मंगला राय साहब एक क्लास में गए और एक फैकल्टी पढ़ा रहे थे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के, तो चलते हुए गए, पहले पीछे बैठ गए और 10 मिनट के बाद उन्होंने कहा कि सामने आए और कहते हैं, सर आई मस्ट अप्रिशिएट यू, आप बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हो, मैं थोड़ी देर और बैठूंगा। और यहां से उनके नोट्स उठाए और पीछे लेके जाके बैठ गए। मैं जरा आपके नोट्स देख लूं, आप क्या जवाब दो? ऑफ कोर्स यस। व्हाट हैपेंड आफ्टर 10 मिनट्स? द प्रोफेसर कुड नॉट speak. The professor had nothing to teach. Do you realize today every student is a photographer, every student is a videographer? अगर आपको ये गलत फहमी है कि आपके नोट्स ऑलरेडी सर्कुलेट नहीं हो रहे हैं, तो ये आपकी गलत फहमी है। वो दिन चले गए जब मेरे जैसे भी कुछ प्रोफेसर्स का टाइम पास गुजारा चल जाता था कि एक ही पेपर बनाते थे, उसको 5 साल तक पूछते थे। एवरीथिंग इज देयर विथ एवरीवन। And do you realize another important thing? As a faculty, if your student has to know X, you have to be prepared 10X. If a student has to know X, you have to be prepared 10X. Why? Because student के पास option है, वो आपसे बात करते करते अपना मोबाइल निकालेगा, चैट जीपीटी खोलेगा, जेमिनाई खोलेगा, कहेगा सर आप ये कह रहे हो लेकिन इसमें तो ये लिखा है। And understand one very simple thing. As a faculty, you are in the business of knowledge. You are in the business of knowledge. And once you have lost your credibility because of lack of knowledge, you will never get respect in your life. That's for sure. Why? भाई आप रेस्पेक्ट किस चीज का? आप अपने नॉलेज का ही तो रेस्पेक्ट एक्सपेक्ट करते हो ना, जब उसको आपसे ज्यादा पता है। आई रिमेंबर विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, देयर वाज अ प्रोफेसर ऑफ माइन इन इलेक्ट्रॉनिक्स। वो कुछ पढ़ा रहे थे और बॉयलस्टेड की किताब थी, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, या किसी एक ऑथर की किताब थी। तो हमारे एक फ्रेंड ने पूछा कि सर ये ऐसा ऐसा क्यों होता है? उन्होंने कहा वेरी गुड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने इस किताब के ऑथर से पूछा है, जब रिप्लाई आएगा तो मैं आपको भी बताऊंगा। और बाद में उसने पता किया कि उस किताब का ऑथर 12 साल पहले मर चुका था। प्लीज अंडरस्टैंड, वो बाद में पता चला। टुडे अ स्टूडेंट कैन फिगर जस्ट लाइक दिस, यस और नो। कैन द स्टूडेंट टेल ऑन योर फेस दैट क्या बोल रहे हो सर, ये देख लो ना 12 साल पहले मर गया, कहां से चिट्ठी आएगी आपको? My second point to all of you is, how many of you are prepared 10x? And if you are not prepared 10x, please remember, what am I saying? You will not be respected, you will not be listened to by the students. And it is very easy, let me be devil's advocate here, and I'm not batting for anyone. It's very easy to say Gen Z is like this only. Do all of you agree कि अब आपके पास जो भी पढ़ने आएगा वो जेन जी ही आएगा, जब तक जेन अल्फा ना आने लगे? आपके पास जो भी पढ़ने आएगा वो जेन जी ही आएगा। और आपने सेलेक्ट किया है ना ये करियर, तो you know that your client will always be Gen Z. Are you prepared for the customer who will come to your classes? And if you are not prepared, you realize you are living on borrowed time. आप उधार के वक्त पे चल रहे हो, जो वक्त कभी भी समाप्त हो सकता। What is my another point? I was talking to the leaders of Volvo Eicher Commercial yesterday at Pithampur, and I'm sharing this example with you. आप किस बैंक अकाउंट से मनी विड्रॉ कर सकते हो? उसी बैंक अकाउंट से मनी विड्रॉ कर सकते हो जिस बैंक अकाउंट में आपने पैसे डाले हैं, यस और नो? किसी और अकाउंट से तो विड्रॉ नहीं कर सकते। If you are expecting goodwill from students, do you realize you first need to have a goodwill deposit with the students? If you are expecting goodwill from the students, आपके उस अकाउंट में goodwill deposit होना चाहिए, तभी तो goodwill आप रिट्रीव कर सकते हो। How many of you have got the goodwill deposit with the students? How many of you have genuinely cared for your students outside the class? How many of you have genuinely been invested in their well-being and career?
How many of you have guided them the right way? How many of you have gone out of your, again I'm saying within legal, moral, ethical boundaries to make them find questions to some answers? The day you do that, the students will respect you. Why? Because you have got a goodwill deposit with them. Till the time you do that, you expect, हो सकता है कुछ स्टूडेंट दे दें, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट नहीं देंगे, और इसके लिए मैं स्टूडेंट को जिम्मेवार नहीं ठहरा रहा. So what is my second point? My second point is, as a faculty, are you prepared 10x before you enter the class? How are you going to bring the value add? How are you going to bring, and I must tell you, the Amex India CEO said something very wonderful in the town hall, which I'm repeating. He said, the cost of information today is going down to zero, but the cost of insight is going up to infinity. The cost of information today is going down to zero, but the cost of insight is going up to infinity. As a faculty, what are you providing? Information or insight? If you're providing insight, my congratulations. If you are not providing insight, please remember you will not be respected. But to provide insight, what do I need to do? But to provide insight, what do I need to do? How many of you have got, and please don't mind, I'm asking few questions. It is not to make you feel bad, but it's just to build the conversation. How many of you have published in Scopus Index journals in the last 6 months? Okay. Wonderful. So some 8, 9 hands are going up. My question to you is, how do you bring new knowledge into the class? You bring the new knowledge into the class when you do research. When you do research, then you have got multiple knowledge sources. When you have got multiple knowledge sources, there are chances that your students would not be exposed to all those multiple sources, yes or no? And that is when you can bring a new perspective. I don't want to get into, and I'm sure sir would have organized and will organize many such faculty development workshops, wherein we'll be talking about NIRF rankings. We'll be talking about accreditations, NBA, NAC, all of that. मैं उसमें जाना भी नहीं चाह रहा. उन सब के लिए तो रिसर्च जरूरी है. Am I right? Does everyone know it? कितने लोग यहाँ वैष्णो देवी गए? Raise your hands. वैष्णो देवी जा, अगेन जस्ट ओनली फॉर लर्निंग पर्सपेक्टिव, वैष्णो देवी जाते समय जय माता दी के अलावा क्या बोलते हैं? कुछ तो बोलते हैं ना. क्या बोलते हैं? जोर से बोलो, मैं ऊंचा सुनिया, आवाज नहीं आई, ऐसे बोलते हैं, हाँ या ना? So my question to all of you is, do you agree that NIRF, NBA, NAC, इन सबके एक्रेडिटेशंस और रैंकिंग के लिए आपको रिसर्च में करना जरूरी है? यस और नो? लेफ्ट वाले यस और नो? सेंटर वाले यस और नो? सारे बोलो यस और नो. I'm not getting into the nitty-gritties. I'm not getting into even there the ranking and accreditation part. What am I talking about? To make an impression in front of the students, you need to prepare 10x. How will you prepare 10x if you are not doing research? It's a very simple question. How do you prepare 10x if you are not doing research? So can we close this chapter? Do we agree that research is necessary? Yes or no? And we also agree, I'm just going by the self-assessment of the raised hands, that research is an area wherein we need to put in a lot of efforts. What are the 3 things I have talked about? I started with institution building. I came down to why students should listen to you. Thereafter, I talked about the power of 10x. And to have the power of 10x, what do you need to do? You need to do research. I will take a pause. Anything you want to ask of whatever we have discussed so far. And then I will just change the gear and I will talk more about some other things. Anything you want to ask, share, agree, disagree, or whatever we have done so far. Please, sir.
The students are not any prepared AI, and therefore they will not serve. But still, you have to prepare more than AI because they are not any paid AI. They will serve. So what I would like something here. The students are ChatGPT, Cloud or other AI, they will serve, and they can supersede us. But if we have information like paid AI, they can. That is what 10x सर मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूं. We must use AI tools, but we must not surrender our thinking to AI tools. I'll just give you an example. How many of you have heard of a company called Nayara Energy? Nayara Energy सुना है आपने? Right? Nayara Energy के हेड ऑफिस में एक दिन मेल आई माइक्रोसॉफ्ट की कि 1 महीने बाद हम माइक्रोसॉफ्ट की सारी सर्विसेज आपको बंद कर रहे हैं बिकॉज यू आर ऑन द लिस्ट ऑफ बैंड कंपनी बाय यूएस गवर्नमेंट. एवरीथिंग मेल एंड एवरीथिंग आउटलुक एंड एवरीथिंग वाज ऑन माइक्रोसॉफ्ट. उन्होंने कहा 1 महीने में हम आपकी सारी सर्विसेज बंद कर रहे हैं. डू यू रियलाइज दैट द स्पेक्ट्रम ऑफ वॉर हैज कंप्लीटली चेंज्ड? I hope many of you are aware that the latest version of Claude was not allowed to be released outside US. It was released and then it was withdrawn. Am I right? My question is, and my bigger problem is, if you become the slave of AI, if you become completely dependent on AI, what happens? You surrender your thinking ability, yes or no? And then one fine day when it is withdrawn, you will start having withdrawal symptoms, yes or no? भाई मुझे सुबह में बताएगा कि जिस जगह पे मैं आया हूं वो अफीम की खेती के लिए मशहूर है. अगर आपको अफीम की लत लग जाए और फिर अफीम ना मिले तो कैसे सिम्टम होते हैं? वही सिम्टम होंगे जब आप एआई के गुलाम हो जाते हो, जब आप एआई को अपनी थिंकिंग सरेंडर कर देते. जब वाइस चांसलर नोट उठा के चले गए, दैट प्रोफेसर हैड नोवेयर टू गो. जिस दिन आपके एआई का चीट कोड किसी के पास निकल गया, डू यू रियलाइज यू हैव नोवेयर टू गो? एंड आई वाज इंटरेक्टिंग विद अ सेट ऑफ फैकल्टी जहां पे मैंने कहा कि ओके इट्स अ गुड बिजनेस स्कूल इन दिल्ली. मैं कहा लेट मी गिव यू अ वेरी वाइल्ड आइडिया. उन्होंने कहा क्या? हमने कहा एमबीए बीबीए के बच्चों को आप केस स्टडी देते हो. केस स्टडी की एनालिसिस वो कैसे करते हैं आप बताओ? उसको चुपचाप चैट जीपीटी, क्लॉड, जेमिनाई उस पर अपलोड करते हैं और उससे क्या पूछते हैं, इसका आंसर मुझे निकाल करके दे दो. मैं आई विल गो अ स्टेप अहेड एज अ फैकल्टी. मैं केस स्टडी देने के साथ साथ उसमें यह भी लिख दूंगा कि क्लॉड की एनालिसिस का यह रिस्पॉन्स है, चैट जीपीटी की एनालिसिस का यह रिस्पॉन्स है और जेमिनाई की एनालिसिस का यह रिस्पॉन्स है. अब हम क्लास में क्या डिस्कस करेंगे? हम तीनों के रिस्पॉन्स को कंपेयर करेंगे. एंड माय फाइनल क्वेश्चन टू यू इज, what are the various aspects which have not been covered in any of the AI tools? What is that which they have missed out upon? Do you realize all of a sudden you have changed the game of learning, yes or no? उसके बाद क्या आपको AI tool से डर लगेगा? और सच्चाई ये है कि बहुत सारी फैकल्टी अभी डर डर के रहती, और आप इस गलतफहमी में ना रहें. हो सकता है आपकी इज्जत करके बच्चे आपके सामने ना बोले, लेकिन जहां आप नहीं रहते हो और जिस दिन आप बिल्कुल साबित हो जाता है कि हाँ आपने एआई से ही कुछ किया था, बच्चे आपका मजाक जरूर उड़ाते हैं. एंड ग्लोबली इट्स अ वेरी सेट precedent. If you are using AI, problem is not if you are using AI. Problem is if you are using AI and you are not disclosing the use of AI. So if you are using AI, that's perfect. But disclose the use of, if you disclose the use of AI, there is no problem. As a faculty, are you doing that honestly?
If you are doing, my congratulations. If you are not doing, then you will not be respected. Yes, sir, you had a question. Please go ahead. You wanted to share something. Yeah. As a teacher, I impart some of this. So I think I always use this model that while delivering your topic or you are whatever you are going to teach to students, we should align our learning part with the real life situations. Of course. That is called learning beyond the classroom. If you are trying to link with this, I think students will learn a lot. सर मैंने क्या बोला था, फैकल्टी की 4 रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है? टीचिंग, ट्रेनिंग, रिसर्च और इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग. अभी हमने इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग को टच किया है, टीचिंग को टच किया है और रिसर्च को टच किया. अभी हम ट्रेनिंग पे आए ही नहीं. When we talk about the training component, then we will be talking about that how, and that's a very, very valid point. Yes. Anything, anyone else? Go ahead. Shoot, ask. Anything you want to ask, go ahead. घर जाके अपनी वाइफ को क्या बोलूं? इतने फैकल्टी थे, मैंने सबको निरुत्तर कर दिया. Anything you want to ask, go ahead. This is your time. वो फर्स्ट चॉइस वाला सिनेरियो मत कीजिए कि फर्स्ट चॉइस के कारण, फर्स्ट ऑप्शन के कारण बैठे हुए हैं. Anything, anyone? Anything, anyone? 1? Anything, anyone? 2? Anything, anyone? 2.5? All is well. इस पे भी तो यस बोल दो कम से कम. किसी तरह हमारे लाइफ में कोई तो स्टैंड होना चाहिए. All is well, yes or no? 2 ही केस में ऑल इज वेल होता है. या तो सब समझ में आ गया, या पीछे लिखा हुआ था कि 3:30 पे मामला खत्म होगा. देख रहे हैं कि 2:45 तक तो मामला पहुंच चुका है. बस आधे घंटे की और बात है और आप नेल्सन मंडेला बन जाते हो और आप कहते हो दिस टू शैल पास. जब वो जेल में थे तो उन्होंने जेल की दीवारों पे एक ही लाइन लिखी थी, दिस टू शैल पास. How many of you were there in the morning session when I was addressing the students? Okay, so there were 3, 4, 5 of them. Okay, perfect. I have a question for all of you. How many of you are in the habit of reading apart from what you teach? Okay. Tell me, sir, which is the last book which you have read? ऑनलाइन किस प्लेटफॉर्म से आप पढ़ते हो? ओके, टेल मी, वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ा है आपने? पढ़ा है? बताइए, व्हाट इज ब्लिट्जक्रिग? ब्लिट्जक्रिग बेसिकली जर्मन वॉर इस टाइप से इसको डायरेक्टली सीधा अटैक करते थे और जहां से भी उनको मतलब टैंक के थ्रू अटैक होता था, प्लेन के थ्रू अटैक होता था और जहां से वो घुस सकते थे, घुस जाते थे और चारों तरफ से. Blitzkrieg is a German word which means lightning strike. So even before your enemy could understand, you have surrounded the enemy from all the sides and they used to cut the reinforcement routes. But sir, जब रशिया गए थे तब ये फ्लॉप हो गया. तो फ्लॉप हो गया. वहाँ का जो वेदर था वो ये टैंक सब बंद हो गए थे. Extreme cold. Extreme cold. Why am I asking that? How many of you are in the habit of reading? Because when you are in the habit of reading, you can engage your stakeholders in multiple conversations, yes or no? Yes. And the moment you engage your stakeholders, read students, in multiple conversation, your respect automatically goes up. See, there is something called psychological contract. What is psychological contract? Psychological contract is about the expectation from the other party about something which has not been explicitly mentioned. आपके स्टूडेंट के साथ रिटन कॉन्ट्रैक्ट क्या है? मैं क्लास में आऊंगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा या पढ़ाऊंगी, आप क्लास में आओगे, आप पढ़ोगे और आप चले जाओ. आपके स्टूडेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट में कहीं भी लिखा हुआ है कि अगर आप
मुझसे मार्केट में मिलोगे तो आप मुझे नमस्ते करोगे, आप मुझे गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग बोलोगे, एम आई राइट? कहीं लिखा है? बट अगर स्टूडेंट आपको मिलता है, डू यू एक्सपेक्ट हिम और हर टू से गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग? यस और नो? सो यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग विच इज बियॉन्ड द रिटन कॉन्ट्रैक्ट. And the student said, when you are expecting something from me which is beyond the written contract, what are you doing beyond the written contract? Can you engage me in meaningful conversations? All those who are in agriculture college, I'm asking this question because it was asked in my XLRI interview. They said, you are from Pantnagar University. I said, yes, sir. मैं पता नहीं क्या पूछा, what is PL 386? मैं कुछ नहीं पता. You don't know what is PL 386? हमने कहा, no, I don't know. Come on, you are an engineer from Pantnagar, you must know. I said, no, I don't know. What did I come to know later? It is a high yielding variety of, it was wheat or paddy, I don't remember which was discovered by Pantnagar University scientists only. I'm just talking about ability to engage in multiple meaningful conversations, students respective. वहां पे तो मैं इंटरव्यू दे रहा था. But when a student asks you, do you understand that student expects you to know certain, of course you cannot know everything, but when you read, and on that note, all those who were there in the morning, you need not answer, but for the others, I have my similar question. How many of you have heard of Rwanda-Nicaragua border conflict? कितने लोगों ने सुना है रवांडा निकारागुआ कॉन्फ्लिक्ट? यू मे नॉट नो द डिटेल्स. कितने लोगों ने सुना है? रेज योर हैंड्स. सिर्फ सुना है, जस्ट, या kindly raise your hands. So we have got 1 2 3 4 5 6. Okay, we have got 6 hands. For God's sake, don't do this, क्योंकि रवांडा निकारागुआ बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट है ही नहीं. वो दोनों देश एक दूसरे से 12,500 किलोमीटर दूर है. और जिस दिन आप स्टूडेंट के ऐसे ट्रैप में फंस गए, आप समझ रहे हो, उसी दिन कहानी खत्म हो गई. That's my, yes sir. नहीं सर, मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल था. रवांडा निकारागुआ बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट सुना है या नहीं सुना है? जिन्होंने भी सुना है, मैं आपको बता देता हूं, ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट है ही नहीं. तो आप सुन ही नहीं सकते. And I can still tell you the best thing which has happened. I was invited by a university in Dehradun in a conference and I was addressing, sir. And I asked this question. Unfortunately, one of the first person to raise his hand was the Vice Chancellor himself. Now please understand my situation. I was his guest. और सबसे बुरी चीज ये हुई कि वाइस चांसलर के अलावा किसी ने हाथ नहीं उठाया. अब आप समझो, मुझे धर्म का भी निर्वाह करना है और मुझे अपने होस्ट की इज्जत भी रखनी है. दैट वाज वन ऑफ माय मोस्ट डिफिकल्ट 2 मिनट्स. कि मतलब बताना है, नहीं बताना है, बट समहाउ आई जस्ट zigzagged out of that. I'm just telling you, it is always better to say what you don't know. No one feels bad if you say कि ये मुझे नहीं पता है, I will check and I will get back to you. Because एक दिन अगर रवांडा निकारागुआ के ट्रैप में फंसे, आप समझ लो कहानी उस दिन खत्म हो गई. उसके दे विल नेवर रेस्पेक्ट यू. और आप जब बगल से गुजरो, कह भी सकता रवांडा 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 रवांडा. What will you do about it? You can't do anything about it. That is the reality. I'm just telling you, it's better to say what you don't know. देखिए, पहले क्या होता था, जब इंफॉर्मेशन आर्बिट्राज आपके फेवर में था, अगर किसी को रवांडा निकारागुआ, मैं 1997 की बात करता हूं या 1999 की बात करता हूं, अगर किसी को रवांडा निकारागुआ बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट के बारे में मंदसौर में पता करना होता, मंदसौर में रहते हुए, हाउ वुड ही और शी डू? बिकॉज आई एम श्योर 97 98 तक यहां पे इंटरनेट नहीं आया होगा, नहीं था. आप बताइए 1998 में मंदसौर में किसी को रवांडा निकारागुआ के बारे में पता करना कैसे होगा? उस पूरी चीज को 4 5 6 दिन लगेंगे, यस और नो? प्रोफेसर से ही पूछेंगे. और 3 प्रोफेसर क्या कह तो रहे हैं.
कहेंगे गुरुजी कह रहे हैं तो है। आज क्या होगा? Nicaragua is in South America, whereas Rwanda is an African country. They are 12,500 kilometers apart. There is no written record of them having any border conflict because anyway they are more than 11,000 kilometers. बच्चा उसके बाद क्या कहेगा आपको? How much time does it take for the kid to figure out what you have said is right or wrong? How much time? 1 minute, 2 minutes. और उसके बाद you know what happens. What is the next part which I am talking about? The next part which I am going to talk about is what sir was talking about training. In 2007, I was at MDI and there was a company called Trident, not the hotel one. यहाँ बुधनी में आपके ट्राइडेंट का एक प्लांट है. दे आर हेडक्वार्टर्ड इन लुधियाना. उनका एक दूसरा प्लांट बरनाला में है. सो ट्राइडेंट हमारे यहाँ एमडीआई में प्लेसमेंट देने आई थी. और ट्राइडेंट उस समय कुछ 12-14 लाख रुपए का पैकेज दे रही थी. 2007 की मैं बात बता रहा हूं. हमारी आंखें फटी हुई थी. हमारी प्लेसमेंट टीम ने कहा कि खूब सारे सवाल पूछो. उनकी पूरी टीम आई थी, इंक्लूडिंग देयर सीईओ राजेंद्र गुप्ता. The interesting trivia about Mr. Rajinder Gupta is that he is a Padma Shri awardee and he is also one of the 7 Rajya Sabha MPs from Aam Aadmi Party to BJP. उनके CHRO ने सारा प्रेजेंटेशन दिया, सब कुछ पूछा, and then he said, now I will request our honorable CEO Shri Rajinder Gupta ji to come on dais and say a few words. Rajinder Gupta ji walked on the dais and what he said is legendary. I share it wherever I go. He said, I quote, मेरे मैनेजर्स ने बहुत अच्छा बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा. आप लोगों ने बहुत अच्छे सवाल पूछे, मुझे बहुत अच्छा लगा. मैं यहां यह बताने आया हूं कि धंधा 4 चीजों से चलता है: खट्टर, बट्टर, लेनदारी, देनदारी. जो ये जानते हो तो हमारी कंपनी में आपका स्वागत है. जो ये ना जानते हो तो परेशानी आएगी. धन्यवाद. एंड ही वॉकड ऑफ द डाइस. व्हाट इज खट्टर, बट्टर, लेनदारी, देनदारी? Debit, credit, amount receivable, amount payable. Now think how deeply he said. Your company survival depends upon what? कितना पैसा आ गया, कितना आना है, कितना पैसा चला गया, कितना जाना है. जितना आ गया और जितना आना है, वो अगर जितना चला गया और जितना जाना है सो ज्यादा है तो आपकी कंपनी बचेगी. अगर ये कम है तो आपकी कंपनी नहीं बचेगी. $22 billion valuation of Byju's automatically became what? Zero. Why? Because this entire balance was not created. My question to all the faculty out here is, what is the khattar, butter, lendari, dendari of your students? Why does a student come and take admission in your university? कोई भी बच्चा किसी भी कॉलेज में क्यों एडमिशन लेता? एंड प्लीज अंडरस्टैंड, अलग अलग बच्चा अलग अलग वजहों से एडमिशन लेता है. यस और नो? भाई कल सर से बात हो रही थी, आप एग्रीकल्चर की डिग्री इसलिए भी ले लेते हो कि शायद आपको खाद की दुकान खोलने के लिए वो मैंडेटरी क्राइटेरिया है. यू नीड टू हैव अ बी फार्मा डिग्री अगर आपको मेडिकल स्टोर खोलना है. एम आई राइट? कुछ ऐसे भी बच्चे आते होंगे, कुछ ऐसे भी बच्चे आते होंगे जिनको नौकरी चाहिए होगी. Do you realize as a customer what do we want? As a customer we want individualized and personalized services. Yes or no? Why is our student wrong when our student also expects a customized and a personalized service from us? The student is not wrong. Please understand, the student is not wrong. How many of us actually try to understand why a student has joined a specific course? And I'm not only talking about the faculty, with all due respect, I'm talking about the HODs as well. How many of us have designed the individualized development plan in true spirit for the students? We all expect that university should take care of us. As a faculty, are we taking care of our students? For how many students can we say that मुझे पता है इसको इन 5 चीजों की जरूरत है और इन 5 चीजों को अगले 3 साल में, 4 साल में, 2 साल में पूरा करने के लिए हम ऐसी चीजें प्लान कर सकते हैं. Some will need a job. Some want to start up on their own. Some have also come कि भाई डिग्री हो जाएगी तो शादी में आसानी होगी. Let's be honest about it. अगर जिनको इसी के लिए डिग्री चाहिए कि शादी में आसानी हो तो उनको कृपया ज्यादा बोझ दबाव ना डालें. उनके साथ आप अपनी एक्सपेक्टेशन रैशनलाइज कर दो. प्लीज होल्ड देम रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट इज मैंडेटरी.
Do not expect them to excel and go beyond the comfort zone. Please understand, the problem is if we expect the fish to fly and bird to swim, there is going to be a challenge. How well do you know your students when you are planning? And for those who need jobs, what is the first thing? सर को मालूम है, एक पावर ग्रिड में पहले डायरेक्टर एचआर हुआ करते थे, रवि पी सिंह साहब। वो हमारी एक कॉन्फ्रेंस में आए थे तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी। ही वॉज एलएम ऑफ MNIT इलाहाबाद, और अब तो NIT प्रयागराज, वट एवर यू कॉल इट। उन्होंने कहा कि एज एन एलम एन इंडस्ट्री लीडर मुझे बुलाया गया था करिकुलम रिव्यू करने की। उन्होंने कहा जब मैं करिकुलम रिव्यू करने पहुंचा तो हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में जो वो बॉयलर पढ़ा रहे थे, वो बॉयलर आखिरी बार इंडिया में 12 साल पहले यूज हुआ और 12 साल से वो बॉयलर कहीं यूज नहीं हो रहा। Do you realize that the faculty who is teaching that boiler, that heat and thermodynamics course, is completely misaligned with the reality? और जब बच्चा जाएगा to work in the core industry, what will the kids say? कि वो जो हमने पढ़ा उसका तो कोई लेना देना था ही नहीं। Do you think that kid will ever respect that faculty? और उसके अपने जूनियर से बात होगी तो वो क्या कहेगा? भाई जो भी पढ़ा रहे हैं सब बकवास, which is a reality. Why? Because it is far from curriculum. How many of you ensure that your curriculum is updated and updated in the true sense? मैं ऐसी भी फैकल्टी काउंसिल मीटिंग्स में बैठा हूं एज अ स्पेशल इनवाइटी, जहां पे ये डिस्कशन हुआ, सुनो ना, वो इंस्ट्रक्शन आया है कि AI 2-3 जगह लिखना है, तो CRM वाले कोर्स में AI लिख दे, वो ठीक लग रहा है तो CRM हाँ ये ठीक लग रहा है, और रिसर्च वाले में भी लिख देते हैं हाँ रिसर्च यूजिंग AI टूल्स, 2 चैप्टर कर देते हैं। और इंतहा तब हुई जब उसमें डिस्कशन हो रहा है, देखो भाई तुमको जो भी पढ़ाना हो पढ़ा लेना, कोर्स का नाम बदलना है, ये देख लो बदल के क्या रख सकते। These are not figments of imagination. I can say it standing here because I was a part of that meeting. और उसके बाद वही प्रोफेसर कॉलर उठा के बाहर जाते हैं, they expect the students to respect them. The students will never respect because you are not honest to the work which you are doing. आप मुझे ये बताइए, इंडिया में अभी टेक्नोलॉजी में मैक्सिमम हायरिंग किस सेक्टर में हो रही है? Which sector? IT सेक्टर में कौन सी कंपनीज? AI कंपनी कोई नहीं है सर। How many of you have heard of something called GCC? How many of you have heard of something called GCC? Raise your hand. Global Capability Centers. The maximum hiring in India as of today is hiring in the GCC sector. The maximum IT hiring, the maximum technology hiring in India is today happening in the GCC sector. If you are not aware about it, your students will not respect it. That is why you need to understand what your company demands. Please understand, आप अपने स्टूडेंट को किस चीज के लिए प्रिपेयर करो? जिसको नौकरी चाहिए. You are preparing him or her for the contemporary job. Am I right? वो आके कहता है कि सर एक चीज आप बताओ कि GCC में जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रोल होता है वो बाकियों से कैसे अंतर आता है? आपको GCC ही नहीं पता. And don't mind my saying this. In the beginning only I had asked अच्छा या सच्चा, और आपने अच्छा बोला. सच्चा बोला था, सॉरी, आपने सच्चा बोला तो मैंने सच्चाई बोल दी. And again understand, नहीं अच्छा तो सर 2 मिनट का था. You are great, you are amazing, you have an amazing future ahead. I am thankful to sir for inviting me. Thank you very much. अच्छा तो 90 सेकंड की स्क्रिप्ट. I'm just trying to help you understand how aligned you are. How many of you have made efforts on a personal level to actually attach with the industries? और जो लोग भी मुझे वो ज्ञान देना चाह रहे हैं कि हम इंडस्ट्री से लोगों को बुलाते हैं, दिल पे हाथ रख के ये स्टेटमेंट देना कि कैसे लोगों को बुलाते, क्योंकि मैंने वो भी देखा है NBA NAC के लिए इतनी जरूरत है तो बुला लेना है.
वो कैसे लोग आते हैं, क्या लोग आते हैं, मैं एक कॉलेज में नाम नहीं लूंगा, उसके मैं इंटरव्यू पैनल में बैठा था और उन्होंने कहा वी इन्वॉल्व एलुमनाई इन आवर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, और एक एलम मेरे बगल में बैठा था, वो एक बच्ची से पूछ रहा इंटरव्यू में, इट्स एन एमबीए इंटरव्यू, ये टेल मी हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। तो बच्ची कहती है कि सर प्राइम मिनिस्टर इज एट अ कंट्री, यस यस हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मैंने बाहर निकल के उनके एडमिशन चेयर को बोला कि अगर इस बच्ची ने रेडिट पे जाके आज डाल दिया कि हमारा इंटरव्यू लेने से पहले अपने पैनलिस्ट का इंटरव्यू लेके बिठाओ, व्हाई इज दैट गर्ल रॉन्ग? हाउ मेनी ऑफ यू हैव मेड इंडिविजुअल एफर्ट्स to actually connect with the industry? Why did I say how many of you are reading? When you connect with the industry, you knows what industry requires. And when you say that, you may not be able to provide all the support for that. But if you are making the students aware, do you realize students will respect you for that? Or John F. Kennedy had said something very wonderful. John F. Kennedy once said, my fellow countrymen, ask not what the country has done for you, ask yourself what you have done for the country. Whenever I meet faculty, I always say, you have every right to expect everything from your university. But how many of you have also asked yourself what you have done for the university? Please remember, there are no rights without responsibilities. There are no rights we all talk about fundamental rights. There are fundamental duties also, yes or no? As a faculty, when you ask, what is the university doing for me? How many of you have asked what you are doing for the university? And if you're not doing anything for the university, I'm sorry, one side of the bargain is not being kept. So why should university care about it? And the last thing I will tell you, I have 5 minutes. Yeah. What is the biggest difference between a commodity, a product and a brand? एक कमोडिटी, प्रोडक्ट और ब्रांड के बीच में सबसे बड़ा अंतर क्या है, और इसका मैनेजमेंट से कोई लेना देना? एक कमोडिटी, प्रोडक्ट और ब्रांड के बीच में सबसे बड़ा अंतर क्या है? नॉट नेसेसरी। आई मस्ट टेल यू व्हाई आई एम सेइंग नॉट नेसेसरी। सोना कमोडिटी में भी बिकता है, क्वालिटी तो उसकी होती है। ट्रस्ट, ओके, व्हाट एल्स? ओके, व्हाट एल्स? प्राइस, ओके। मैं अभी बोला सोना कमोडिटी में भी बिकता है, प्राइस इज नॉट, प्राइस डज नॉट चेंज। व्हाट एल्स? Packaging, okay, no. The biggest difference between commodity, product and brand is the ease of replaceability. The biggest difference between a commodity, a product and a brand is the ease of replaceability. Which is easiest to be replaced? Commodity. If crude is a commodity, where should India buy the crude from? Wherever it gets cheapest from. Whether it is Russia, whether it is Venezuela, it does not matter. Am I right? Commodity is the easiest to be replaced. Which is the next more difficult to be replaced? Product. Which is the most difficult to be replaced? Brand. My question to all of you is, what are you, commodity, product or brand? 3 लोगों ने ब्रांड बोला है, बाकी सब कह रहे हैं ये आउटसाइड सिलेबस क्वेश्चन है, वी रिफ्यूज टू आंसर दिस। बताइए, व्हाट आर यू? कौन कौन ब्रांड बोल रहा है, हाथ खड़ा कीजिए। नहीं, कुल मिला के 5 ही हाथ आ रहे हैं, उसमें भी 2-3 लोग ऐसे कर रहे हैं कि बुलाओगे तो हम कह देंगे हम अपना बाल ठीक कर रहे थे। हाँ जी, how many of you are brand? Raise your hands. Okay, so my question to you is, what makes a brand a brand? बताइए, what makes a brand a brand? When you bring value added, trust कहां से आता है? What makes a brand a brand? That way, the university which says the world is here, where are you? It should have the strongest brand.
मैंने नाम किसी का नहीं लिया है. I can give you a statistics. Guess what is the advertising budget of Amity University? And are you also aware that Bennett and Coleman is also an owner of Amity University? It is not only Dr. Chauhan. Actually, there is a deal between Bennett and Coleman and Amity University. Amity University has given them some stake, and in response to that stake, Bennett and Coleman, the PE division of that, they have given them advertising credit. So 700 crores you can spend over the next 5 or 6 years. In lieu of that, you will give me this much stake in your organization setup. This is the deal, because one of my friends was heading that. This is the deal between them. So of course, advertising does not make a brand, because if your product is not good, your advertising will fall flat on its face. I will tell you what makes a brand a brand. Simple question. When I tell you trust, which company comes to your mind? मैंने ये सवाल हजारों बार पूछा और आज तक इस सवाल का जवाब किसी ने भी रिलायंस नहीं दिया, किसी ने भी इसका जवाब अदानी नहीं दिया. Reliance and Adani are great companies. I have invested, I have bought their shares. So if they do well, I will benefit. But no one has ever said trust related with people. 99.9% say Tata's, right? And I will tell you what makes a brand a brand. What makes a brand is its ability to consistently deliver on its promises every single time. What makes a brand is its ability to consistently deliver on its promises every single time. And my question is, what is your brand story? Because till the time you are a commodity or a product, please remember you are easily replaceable. Replaceable not only by the university, replaced also by the mind share of your students. And if you want to become a brand in the minds of your students, please ask yourself this question: what is my brand story which I want to live every day? What is my brand story which I want to live every day? How would I want my students to talk about me 5 years from now when they are no more my student? How many students in an alumni meet 10 years from now would love to walk up to me and say, sir, aapko yaad nahi hai? I can tell you a secret. If you prove yourself as a brand, you can command premium. And that premium is also in terms of respect. The premium, I always say, the best of faculty are also the toughest tough taskmasters. And they can afford to be taskmasters. Why? Because they are amazing faculty. The professors whom I remember from my college, they were not the easiest in the classroom. I remember there was a professor of mine. हम लोग पहली क्लास में गए, किसी ने प्री रीडिंग नहीं की थी. उन्होंने हमसे पूछा, सबने प्री रीडिंग की है? यस मैम. पक्का की है? यस मैम. हाँ, वैभव, यू स्टैंड अप. बताओ व्हाट यू हैव रेड. वैभव ने कुछ कहानी सुनाई. 3 मिनट का बाद कहती है, वैभव, वॉट एवर यू हैव सेड इज बुलशिट. हैव यू रेड इट? एक्चुअली मैम. यस और नो? मैम, यस और नो? नो मैम. हाउ एल्स? हाउ मेनी अदर्स हैव नॉट रेड? स्टैंड अप. सब खड़े हो. बट हम फिर भी आज उनको याद करते हैं और इज्जत देते हैं, बिकॉज शी वॉज एन अमेजिंग फेनोमेनल प्रोफेसर. If you have got a brand, you can command premium, and that premium is in terms of your respect. The sooner you understand, the better it is. Just last thing, let me end on a lighter note. Students आपके बारे में हमेशा कहते हैं, पहला पत्थर वो मारे जिसने पाप ना किया. हम हमेशा स्टूडेंट्स के बारे में कहते हैं, हम हमेशा जेनजी के बारे में कहते हैं कि ये लोग स्क्रीन पे चिपके रहते. मैं पिछले 1-1.25 घंटे से आपको देख रहा हूं.
आप में से भी बहुत लोगों ने स्क्रीन का इस्तेमाल किया है, एंड यू रियलाइज आपने एक बार किया, 3 बार किया, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, बट अगर आपने कर दिया, यू हैव लॉस्ट द मोरल ऑथोरिटी टू टेल द स्टूडेंट्स नॉट टू लुक एट स्क्रीन्स। एंड स्टूडेंट्स टुडे आर वेरी वोकल, कहेंगे यार हमने 5 बार देखा, 3 बार तो आपने भी देखा है, इसमें मैं कहां गलत हूं? ऑलवेज रिमेंबर, you are constantly under watch. Your students may not say it on your face, but your students are observing everything. They make a mark everything about you. And as a professor, the last thing which I tell you, how many of you have heard of, it was actually a story which Dr. Manmohan Singh said. How many of you have heard of something called Scissors wife principle? The story of Scissors wife principle goes that the king Scissor, one day a person came to his house and said that, you know what, your wife is having an illicit affair, आपकी पत्नी का कहीं अवैध संबंध चल रहा है. The king Caesar asked that, go and kill my wife. His wife was killed. 10-15 days later, that same person came and said, king, you know what, perhaps the information which I gave you was wrong. And people expected King Caesar to feel bad, and without batting an eyelid, the king Caesar said, so what, if you are Caesar's wife, you should be above suspicion. If you are Caesar's wife, you should be above suspicion. Dr. Manmohan Singh quoted this on the floor of parliament when he said, as a leader, you need not only be honest, you should be perceived also as being honest. My dear faculty members, Dr. Manmohan Singh said about the leaders, I am talking about teachers. As a faculty, you should not only be honest, you should be perceived also as being honest. And that means you are constantly under watch. On that note, we essentially have talked about the 4 pillars of institution building. We talked about teaching, we talked about training, we talked about research, and we talked about institution building. And I hope I could just give you a perspective that the 4 of them are not independent of each other. 4 of them are interrelated to each other. I wish all of you the very best in your academic and professional journey. May all of you touch the pinnacle of success in your lives. Thank you so much, sir, for inviting me here. Thank you very much, everyone. God bless you all. Thank you. Thank you so much. Thank you. So, good evening. I have been asked to just say a few concluding words. So, thank you, Dr. Subrat. Subrat ji, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. I think you have all got certain very valuable suggestions and lessons of out of him, his experience. As he said, ये हर बार decade कहते हैं, मुझे लगता है कि अब 2 दशक पूरा होने वाला है. We have been working associated together. और अभी ये ब्रांड स्टोरी की बात कर रहे थे, ब्रांड की बात कर रहे थे, तो सुब्रत जी, आई मस्ट टेल यू इन फ्रंट ऑफ यू दैट एज अ ब्रांड and as a brand story, you have evolved. Every time that I listen to you, I see a better brand story and a better brand of you. So I think honestly, I hope हम कर पाए, इतना ना कर पाए, लेकिन आई एम श्योर the realities would have resonated in your mind. और नहीं तो कम से कम इतना तो है कि जरूर सोचना शुरू कीजिए, कितना कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, लेकिन हकीकत यही है. और आज के माहौल में, आज का मंदसौर यूनिवर्सिटी आपको पूरी स्वच्छंदता, पूरी अपॉर्चुनिटी, जितनी भी बातें इन्होंने कही है, उसके लिए वो तैयार है, वो दे रही है, देती है, बल्कि आपसे वो अपेक्षा करती है. द यूनिवर्सिटी एक्सपेक्ट्स यू टू grow individually, or if you can grow individually on all these 4 pillars, Mandsaur University will grow to bigger heights, richer heights. और मैं इतना ही कहूंगा कि इसमें पीछे ना हटे. आपका
और जब मैं कई बार कहता हूं कि इंस्टीट्यूशन का आपकी ये अपॉर्चुनिटी बहुत रेयर यूनिवर्सिटीज है, मैं सिर्फ आपसे सिर्फ 2 मिनट और ये कहना चाहूंगा, picking up on your experiences of those NHRD and ranking days where you traveled north, south, east, west, more than so many institutions and university. What is from that? What do you see? I mean, what is that? Any learning that you would like to share after? I mean, having spent few hours in this university and having interacted. What do you feel where we stand? Are we really in a state where we can certainly grow, or we can really go towards excellence, or what we are designing? Sir, yesterday when we met over dinner, we were having a discussion about the genesis of the university. I was very impressed by the story of the university. And I told very categorically, India needs more universities like this, which can actually build up the people from the region. And that is how the true growth of the country will happen. But being here for almost 18 hours now, I can tell you one thing where you lack. You're doing a lot of things which are good. The problem with many institutes, many of the top institutes, I'm saying, वो करते एक हैं और दिखाते 11 है. शायद मुझे आकर ऐसा लगा, बिकॉज मैं इस बिजनेस में पिछले 16 साल से हूं, कि मंदसौर यूनिवर्सिटी करता 11 है और दिखाता 1 है. तो जो आप कर रहे हैं, प्लीज अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग, जो दिखता है वो बिकता है. वॉट एवर यू आर डूइंग, you must feel proud of it, and you must let the world know. There are so many good practices. I was never aware that, your pharmacy college is one of the oldest. I was not aware that you have got, forensic department wherein you are doing amazing. I was not only surprised, I was shocked to hear that your alumni from engineering college are doing so well globally. It was very heartening to know that in one of the online alumni meet, there were professors whom the students, they could relate so well. It is pleasure to know that your faculty attrition rate is not very high. These are the things which many of the top universities don't have. And understand one thing, you need to feel proud of yourself. You are doing a lot of things which are amazing. हमारी तो लड़ाई ही इस पे होती थी. And if you show the world, I'm sure your university has got a great future. This is my observation, sir. We need to let the world know what good we are doing. और एक लास्ट चीज आपको कहूंगा कि जो हम लोग बातचीत में निकल के आती थी, कि बहुत जैसा इन्होंने कहा कि एक चीज करते हैं 11 चीज दिखाते हैं, बट बहुत जगह इनकी कहानियां हैं जहाँ पे ये जाते थे, तो देयर वाज एब्सोल्युटली नो फ्रीडम, देयर वाज नो ट्रांसपेरेंसी. वो फैकल्टी डेवलपमेंट का कोई वो स्कोप नहीं था. टेल मी और एक चीज ये मैं अपने लिए नहीं कहना चाहता हूं, बट एक जो ट्रस्ट बिल्डिंग हम लोगों का एक कॉर्ड शुरू हुआ, एंड दैट टाइम वी आर नॉट अवेयर व्हेन ही विजिटेड फर्स्ट टाइम फॉर दैट रैंकिंग to one of the institutions in Noida where I was associated, and he quotes it. I mean, I'm not even aware. तो वहां पे प्लेसमेंट का डेटा मांगा गया कि प्लेसमेंट का ही हैड टू वैलिडेट कि जो हम कह रहे हैं, एंड आई वाज वेरी ट्रांसपेरेंट कि भाई जो है फाइल दिखा दीजिए सारी चीजें. और बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट में ये गए, वहां पे उनको अगर वो स्टोरी आप सुन. Odd saying this. I went to Narsi Munji. I can name it. I don't care about that. I went to Narsi Munji. मैडम शोभा पाई वहां की प्लेसमेंट चेयर है, शायद अभी भी है, उस समय भी होती थी. शोभा पाई मैडम लेकर के मेरे पास आई. उन्होंने गोल्डमैन सैक्स का ऑफर लेटर, पहले एक्सेल शीट दिखाई, हमने कहा फिर ऑफर लेटर दिखाओ. उन्होंने गोल्डमैन सैक्स का ऑफर लेटर लिखा था 34 lakhs. मैंने कहा मैडम ऑफर लेटर दिखा दो. तो हमने ऑफर लेटर में सब कुछ ऐड कर लिया, सब कुछ टू द 100%, इंक्लूडिंग ज्वाइनिंग एंड रिटेंशन बोनस बोथ. वो ऐड करने के बाद 27 लाख हुआ, 27 लाख. मैंने कहा मैडम सब जोड़ के 27 लाख हो रहा, आप तो 34 lakhs कर रहे हो. उन्होंने कहा कि सर एक्चुअली हमें बच्चों ने कहा कि 7 लाख ऊपर से मिल ही जाते हैं. हमने कहा मैडम हो सकता है कोई बच्चा 17 लाख भी कहा हो, तो इसको 44 लाख क्यों नहीं लिख देती हो.
But I hope you will realize I will evaluate you only for what document I have got. I'm telling you, I was hated by people. I'm talking about the best of university. Sir was in a college in Noida. एक हमें कमरे में बिठाया गया, उस कमरे में 7 फाइल रखी हुई थी। इनके पास तकरीबन 360 बच्चे उस समय होते थे, या 300 जो भी होते थे, वो रखा हुआ है, सेक्शन वाइज फाइल रखी हुई है। और आपको एक लैपटॉप दे दिया गया, उसमें एक एक्सेल फाइल रखी हुई है। इनका एक बंदा वहां पे था, नो फैकल्टी, नो रजिस्ट्रार, नो प्लेसमेंट चेयर, नो प्लेसमेंट इन, नथिंग। कि सर आपको जिसका भी देखना हो रोल नंबर वाइज लिखा हुआ, आप मुझे बता देना, मैं उस फाइल से रोल नंबर की शीट निकाल के दे दूंगा। Now understand, an institute is claiming 20 lakh average salary, out of which some 20-25% data is fudged. So that is actually 16 lakhs or 15 lakhs. Here is a college which is claiming that our average salary is 5.5 to 6 lakhs. Every data is validated. I'm on record saying I will give this institute lower marks on placements, but I will give this institute very high marks on leadership and governance. You like it, you don't like it. My God, this is how we assess how leadership is there. And people actually appreciate it when we brought those perspectives. हमने कहा कि वो अच्छे कॉलेजेस में जब आप जाते हो तो कारनामे भी बहुत होते हैं। Are you aware about it? I went to an IIM, I will not name, ईस्ट इंडिया में है, एक IIM है। हमने कहा यार ये आप एवरेज सैलरी जो कह रहे हो, ये कहां से कैलकुलेट हुई? तो नहीं, हमने कैलकुलेट कर ली। मैंने कहा कोई एक्सेल होगी, कहां से की? तो नहीं, हमें मोटा मोटा देख के लगा कि इतना ही होना चाहिए। हमने कहा मुझे तो देख के लग नहीं रहा है। एंड यू हैव नो ऑफर लेटर टू शेयर बिकॉज यू डोंट वांट टू शेयर because you'll be exposed. I'm just talking about, and of course, I have whatever I have seen in the last 18 hours, I can vouch for it. That you don't have that pretension of hiding something. And that is something very, very good. And I think all of you deserve a round of applause for that. Thank you. So I think why I chose to bring this point was that the university that we are sitting here and the legacy that we have, the values that we have, and the leadership, and I'm talking about the leadership of the founder and I mean, as far I am concerned, I'm 10 months old. Many of you are equally old or you're equal. I mean, you're old or equally new. But then in terms of policies, in terms of the benefits that the faculty has, the environment that has been communicated to you at the time of your hiring, recruitment, or any point in time, I think these are all very, very transparent. There is nothing to hide. And I think this particular aspect, this strength of this university, you won't find in many of the leading institutions in the country, so-called branded institutions. So please utilize this opportunity, utilize the wisdom of people like Dr. Subrat and many previous speakers we had, and many more we will come. I wish Dr. Subrat could have spent much more time. He can have many, I mean, we can have workshops, FDPs, team building exercises, outbound exercises. He's always available. He's very kind. And he was just sharing कि अगर 15 दिन में देखें, next 15 दिन का तो not a single day is at home. He's just traveling. And today he is here training the students, placements, and more than that, he has helped recruitments, getting companies getting the best of the talent from universities like this. So he can be of help there as well. So a big hand to Dr. Subrat. And we have a equally competent, experienced trainer in Amit Chaturvedi ji. And somehow he has accompanied, but we could not take the benefit of his presence. But certainly in future, sir, you're most welcome. And we'll certainly have more such opportunities. Time is running out. You can see also in my attire, I'm also traveling tonight. So I just thought, let me be at leisure. So we'll just pack up and we'll leave. Thank you so much. Thank you.
Any one of you would like to have one or two? Attendance sheet is in a circulation, please sign and hand over to the Krishnapal ji, System Department. Attendance sheet कर देना sign करके please.